बेसिकली जेमिनी एपीआई कॉलिंग्स के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि हम सर्च करेंगे इसके अबाउट कि इनकी वेबसाइट्स में क्या क्या अवेलेबल है, और साथ ही साथ में इनकी एपीआई कॉलिंग क्या अवेलेबल है, हाउ दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन इज वर्किंग, राइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जेमिनी एपीआई के बारे में हम सर्च करेंगे जेमिनी एपीआई, और ये वेबसाइट खोलेंगे ai.google.dev। तो बेसिकली इन्होंने इनका इंटरफेस अच्छा है, और इन्होंने थोड़ा बहुत समझा रखा है कि हमारी एपीआई कॉलिंग कैसे होती है। बेसिकली हम पाइथन में यूज करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग अदर थिंग्स। तो बेसिक रिट्रीवल इनका ये गूगल रिट्रीवल ओएस, इंपोर्ट ओएस, एंड देन जेमिनी और देन गूगल एपीआई। मेन थिंग है गूगल एपीआई की हम कैसे इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे वो देखेंगे हम। और इनका मॉडल जेमिनी 1.5 फ्लैश, दिस इज द कूलेस्ट मॉडल, आई ऑलरेडी वर्क ऑन दैट। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें इमेज दिया और साथ में रिस्पॉन्स दिया उसने। तो ये बहुत कूलेस्ट पार्ट होगा अपन जैसे इसमें पूरी बिल्ड करेंगे। साथ ही साथ में डेवलपर जेमिनी बहुत सारे सोर्सेस में काम कर रहे हैं अभी के लिए। गूगल क्लाउड्स और इन सब में भी, एस कोड में भी अवेलेबल हो गए इजीली। और साथ ही साथ में बेसिकली ये डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जेमिनी एपीआई की बात करते हैं, डायरेक्टली हम इसकी एपीआई की क्लाउड स्टूडियोज पे चलते हैं। ओके, तो एपीआई की क्लाउड स्टोरेज में चलेंगे तो बेसिक फंडा ये है। ओके, मेरे ये इस वाले अकाउंट से जुड़ा हुआ है। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके खुद के अकाउंट से। मेरे ऑलरेडी एक अकाउंट से जुड़ा हुआ है जहाँ पर मैंने एक एपीआई की ले रखी है। आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताया था उसके अंदर का ही जितना भी चीज़ें और पार्ट है वो कंसोल पे आपको यहाँ बनानी पड़ेगी पहले आईडी अगर सारी की सारी। ओके, तो पहले अपन लाइब्रेरीज में चलते हैं। अनटाइटल्ड प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। दिस इज द प्रॉम्प्टिंग पार्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीजें आ रही है बहुत सारी, तो मैं इनके बारे में आपको एक एक कभी गो थ्रू करूंगा कि हाउ दिस इज वर्किंग। आप न्यू ट्यून्ड मॉडल भी बना सकते हो आपका खुद का, जो आपको बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा एक मेन्यू पार्ट में देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनिशियली दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन जस्ट क्रिएट, जनरेट आवर मॉडल। वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट जस्ट गोइंग थ्रू दिस थिंग बिकॉज हमको ये सब नहीं चाहिए अभी इस फॉर्मेट्स में। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर और प्रॉम्प्ट्स और डाटा भी दिया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर डाटा में ही आपको फैच करके देगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर डाटा में ट्यून मॉडल आपको क्रिएट करके दे देगा। और जेमिनी 1.0 यूज हो रहा है इसमें, मतलब 1.5 फ्लैश यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो बेसिकली तो गेटिंग स्टार्टेड में अगर मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले, तो गेटिंग स्टार्टेड में इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन अगर रीड करें तो बेस्ट वे में अपने लिए बेस्ट होगा ये पूरा का पूरा। साथ ही साथ में इसमें पूरा का पूरा बता रखा है कि कैसे स्ट्रक्चर काम कर रहा है, कैसे हमारा इनपुट जा रहा है और कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। और उसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग भी पूरी डेप्थ में दे रखी है। वी आर नॉट गोइंग टू द डेप्थ पार्ट, राइट। You can just learn about you can just click on that, getting started with that, you can just move across। and अगर मैं डायरेक्टली इसके डॉक्यूमेंटेशन में मूव करूँ तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये बताती है कि जेमिनी 1.5 फ्लैश बहुत ज़्यादा वे में यूज हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है। साथ ही साथ स्पीडी भी है। ऑफ कोर्स दिस इज द स्पीडी पार्ट, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द अदर एआई, but like the open AI that ChatGPT is provided, they have some latency, right? But Gemini have their lower latency because it's not generating the much more amount of data as compared to open AI, चैट जीपीटी। ओके, तो ये साथ ही साथ में 1.1 बिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट कंसाइज वे में रिड्यूस करता है बिग डेटा को, और अपने सेगमेंटेशन बना सकता है। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में जाऊँ तो बोलो कि उसको इतने ऐसे ऐसे सेगमेंट्स कर देगा कि उसकी रिट्रीवल में आपको बहुत इजीली हेल्प होगी, राइट। तो नेटिवली मल्टी मॉडल्स भी साथ में प्रोवाइड कराता है, बट ओपन एआई चैट जीपीटी से अगर एडवांटेज डिफरेंस की बात करो तो वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता, राइट। यू कैन जस्ट बाय, यू नीड टू बाय फॉर दैट, right? You don't need to buy, you just use like the text, image, video, audio, you can just use with that with हम हमारे प्रोजेक्ट में टेक्स्ट और इमेजेस ही लेके वीडियोस वगैरह आप अगर आप एक्स्ट्रा एक्सटर्नल यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर you solve the task of the fine tune, call the code, function calling, as a search the answer embeddings, you can just build your code with the help of that. You can just run, see how this is the 1.5 working. We are just moving across with the 1.5. ओके, तो ये अपना 1.5 वाला प्रॉम्प्ट है, और यहाँ पर मैं आपकी खुद की मर्जी की प्रॉम्प्टिंग दे सकता हूँ साथ ही साथ में कि
knowing about startup, startup in India. सी, देखो यहाँ पर साथ ही साथ में एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये यूजर है और एक मॉडल है। मॉडल अपने को कितनी देर में आंसरिंग दे रहा है वो आपको काउंटिंग और नंबर ऑफ टाइम्स सेकंड्स भी बता रहा है। यू कैन जस्ट इंक्रीज योर एक्यूरेसी। साथ ही साथ में आप अभी देख रहे हो कि इसके आंसर्स बहुत बड़े आ रहे हैं। You can just reduce in this case if you can increase your temperature. The temperature part is like the threshold that they they giving an answer. They're highly threshold value that giving the answer is concise way, but the not giving the answer is a deeper part, right? Okay. Gemini also support the safety securities part. You can not able to show any like the abusive language in that case, because that see this is abusive part is there somehow they don't give their answer on that. Okay. और साथ ही साथ में कुछ और चीजें भी हमारी साथ ही इसमें जुड़ी हुई है। और टोकन काउंट, इतने ही टोकन आपको एज ए इनिशियली फ्री देता है। इट्स लाइक इनफ, यू कैन जस्ट यूज सो मेनी टाइम्स फॉर दैट केस। ओके। तो यहाँ पर अभी जेमिनी 1.5 भी आ चुका है। जेमिनी, अगर मैं गामा 2 की बात करूँ, गामा 2 मैंने भी यूज करके देखा है। दिस इज द लेटेस्ट। और टोकन काउंट आपको बहुत कम मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इज लाइक द प्रीव्यू बिल्ड है। अभी कोई उसके लिए नहीं आया है जो मेन, अगर उसकी बात करी जाए तो। और अगर मैं इससे पूछना चाहूँ कि जस्ट राइट द कोड ऑफ LCS इन DSA, because they are trying to give their answer. It's like the good way. See why this take is long time, because the gamma version had their dapper part, right? They giving the most prominent results. If they give the most prominent result, they the model takes the time to give their answer, right? Because they having the some constants and values part, right? See, this is how this is a very beautiful format that which is giving. Because see, this is the code part, right? If you want to change any language, you can just chat with that in C++. You can just write the in C++. The giving the code in C++. This is the part. This is the part that given the in a LCS format on the Python language. And initialization. See, they give the proper abstract and explanation part. Okay, this is how we need to come up with our main application. How this is building. We are just going to the build this project. Okay, हम इसको बिल्ड करेंगे साथ ही साथ में। तो गामा 2 आपने यहाँ पर भी देखा, गामा 2 टोकन का। ठीक है, 1.5 को हमने देखा ही, 1.5 फ्लैश देखो हमने, वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, दिस इज द many models that we have just built prompt with gallery. We are just seeing the look at things. Okay, see that there are so many things, and you can just select and store and asking for the Gemini cookbook audio receipt. My tutor and the list of the item, list item from image. See how this is the beautify format, right? How this is the beautify format. This is the image that which is given as an input, and this is the output that showing that particular the list of object. कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है उसने डिटेक्ट कर लिया। दैट द पार्ट ऑफ द डीप लर्निंग, या इट्स द पार्ट ऑफ डीप लर्निंग, बट and the basically we are just not going to the depth part, because this already APIs is made up of already made for you can use that, right? Can use this as well as you can see this is the given API and all the list of object that which is available in this image. Okay, you can just as well as upload my image that which is already present in this case, just using the Google Drive images.
So many I will send two images. If I select this, yeah, I just select this, then I just run. No, okay. Okay, I just run on this part. Okay, you can just test on that. It's not an issue. You can just test. You can just put your image and asking that. They have lots of many functioning at there. You can just check upon that. That the background API callings is also present. That the contributor that which is me. Right. You can just learn about that on a deeper part. Okay. तो गूगल क्लाउड के साथ भी कोलिब्रेशन है तो गूगल क्लाउड लाइक द ऑटोमेशन वर्किंग जो बहुत बहुत इफिशिएंट होगा अपने लिए आने वाले टाइम में ओके तो दिस इज द पार्ट फॉर द जेमिनी एपीआई ओके जेमिनी एपीआई okay and you need to create this one right if you just click on this you need to create this one you just need to select over the model in the next video we are just initialize our project and create the api callings api keys in this case you can just try to create a api keys this is the free of cost not an issue regarding on this and how this is the api calling is work in this case we are just going to look after the that the things is completed and some projects is starting and initializing some giving the presentation part of it okay so thank you so much for